Um, okay, Bismillahirrahmanirrahim. The program cell death. So we are studying this topic. Actually, this is not the full chapter we are going to study, but this topic will be studied from the Lehninger principles of biochemistry. And I think this is the 12th chapter, biosignaling. This topic has been taken from the 12th chapter of Lehninger principles of biochemistry. So before we talk about the program cell death, we have to know about the tumors and about the cell division, because these are linked with the apoptosis and the program cell death. Program cell death is also called the apoptosis. Apoptosis. Okay. So tumors and cancers are the result of uncontrolled cell division. When there is a lot of cells, they are dividing very fast, they make the lump, they make the tumor. This is called the cancer. Uncontrolled cell division makes the tumors and make the cancer. And cell division is regulated by family of extracellular growth factors. Several growth factors are released. They go to the cell surface. For example, this is a cell. There is a cell surface receptor. Several growth factors come and bind to the cell surface receptor and instruct the cell to divide and instruct the cells to divide. This way, the growth factors are involved in the cell divisions. Proteins that cause resting cells to divide, and in some cases they allow them to differentiate. So not only the cells can divide under the effect of growth factor, I write it GF growth factor. Not only they divide, but sometimes they are differentiated according to the requirement. So last time we talked about the proto-oncogenes are the group of genes that cause normal cell to become cancerous when they are mutated. Proto-oncogenes are those genes when they are mutated, they can cause cancer. When the proto-oncogenes are mutated, in unmutated form they are not cancerous, but in the mutated form they cause cancer, and the mutated form is called the oncogene. Mutation in the proto-oncogene are typically dominant in nature, and the mutated version of proto-oncogene is called oncogene. Mutated version of proto-oncogene is called the oncogene. The direct cause of almost so not only this one, but also the direct cause is almost always a genetic defect. Some people are genetically more prone to the cancer because some of the genes are genetically inherited to the individuals from their parents in the mutated form. So genetic defect cause many times the cancer, but also many times this genetic defect is because of the effect of toxic compounds. Some toxic compounds are mutagen. Mutagen are those compounds that cause mutation. And some of the carcinogen, definitely carcinogen also cause mutations in the cells, and some compounds are carcinogen like ethadium bromide. We write abbreviation it for ethadium bromide, ETBR sometimes we write ethadium bromide. So this is carcinogen. Some other compounds are can be mutagen. So toxic compounds can also cause mutations in the cells and can cause cancer. First reason, the genetic effect. Second reason, the toxic compounds. There is another reason for the cancer, that on a high energy radiation, when the high energy radiation interfere with DNA is mutated, and high energy radiation can also cause cancer. So there are three reasons of cancer. So there are three reasons of cancer. So cancer mean, so there are three reasons of these tumors uncontrolled cell division. So there are three reasons of uncontrolled cell division. So there are three reasons of cancer. So there are three reasons of tumors, you can say. Okay, under normal condition, this is EGF, epidermal growth factor binding domain, right? This is the receptor tyrosine kinase class of receptor, and this is the cell surface. You can see this is the lipid bilayer. This is the lipid bilayer. You can see this lipid bilayer is embedded with this receptor tyrosine kinase class of receptors, and this is the EGF, epidermal growth factor binding site. This is shown in red. This is epidermal growth factor binding site on the EGF receptor.
This is epidermal growth factor, and this is epidermal growth factor receptor. This is receptor for the EGF. This is receptor for the EGF, and the EGF is shown in red, and it is binding to its receptor. Every ligand, every growth factor binds to its receptor. So when this epidermal growth factor binds to its receptor, its intracellular domain actually phosphorylate each other. They are mutually phosphorylating each other, and they are activating each other. This is the intracellular domain of the receptor that are being activated. You can see the spark sign. This is spark symbol. This spark symbol, it means the intercellular domains have been activated, and this way by the downstream signaling the cells are divided. But in some of the cases, like especially in the breast cancer, this ERBB gene is mutated in a way that even if the EGF, epidermal growth factor receptor, is not there, the intercellular domain is constitutively active. Constitutively active means is always active. So because of the mutation in this receptor, the intracellular domain is constitutively active. This constitutively active means they will keep on sending the signal for the cell growth. Continuously, it will send the signal for the cell growth. Continuously. Cell growth, and cell will keep on dividing and dividing, and will make the tumor. Cell will be kept dividing, and it will make the tumor, and will make the cancer. In many cases, the ERBB gene, this gene is mutated, and the cancer is caused. And this gene is mutated usually in the breast cancer. ERBB gene. So what next? Tumor suppressor genes. So not only there are the genes involved in the cell division, but also there are genes that suppress the tumor formation. Actually, tumor suppressor gene means they suppress the cell division. Who? The tumor suppressor genes. Mutation in any one of these genes can also lead to the formation of tumor. Not only the cell division may be fast in the tumors, but also tumor suppressor genes may be mutated, and that's why they cannot stop the cell division, and cell is divided many times, and the cancer is caused. So two sets of genes we separate. One are the cell division that contribute in cell division. One set of genes is contributing in cell division, and other set of genes, they stop cell division. I write here division, and you can see. So the mutation in cell division genes are in a way that don't stop the cell division, then cell division is kept on. If such mutation that cause the cells to keep their cell division, this also cause cancer. And sometimes the mutation in the genes that stop the cell division, their mutation make them inactive. If the stop cell division genes are inactive, cell division will be uncontrolled. So there can be the two reasons. So mutation in both copies of the genes, for example, retinoblastoma gene, P53 gene, and P21 gene. These three genes are tumor suppressor genes. When they are mutated, they cannot stop the cell division, and cell is divided many times, and this kind of tumors are generated. These white lumps are the tumors. These white lumps are the tumors in the liver. This is the liver, and these white lumps are the tumors because of the mutation in the tumor suppressor genes. Which tumor suppressor gene? RB, P53, P21. You can see RB means retinoblastoma occurs in children and cause the blindness if not surgically treated. Right? And there is another famous gene, BRCA1 gene. When the BRCA1 gene is mutated, the female
most of the time suffer from the breast cancer. Which gene? BRCA1. BRCA1 is abbreviated, is spoken as BRCA1. BRCA, BRCA1 gene. Those very rare individuals who inherit one defective copy of P53 gene commonly have this kind of syndrome. Even one copy of the P53 gene, if it is mutated, the person may suffer from the cancer syndrome. Okay, they have given one of the example of the colon cancer. Colon cancer. So colon is somewhere here, and the individual, the human, is shown somewhere here. So this is the normal epithelium of the colon. This is the normal epithelium of the colon. So you can see the green genes are those genes that that control the cell division, that actually enhance the cell division, and the red ones are those genes that are tumor suppressor gene. Red ones are those genes that are tumor suppressor genes. I write here red is equal to ट्यूमर सप्रेसर. ठीक, अच्छा जी, बात ये हो रही थी कि जो रेड है ना, रेड है ट्यूमर सप्रेसर, और ग्रीन जो है ये सेल डिवीजन को इंक्रीज करते हैं, ये ट्यूमर काज करते हैं. ग्रीन वन ट्यूमर काज करते हैं और रेड वन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं. रेड वन देख रहे हो. सबसे पहले क्या होता है, एमएमआर जीन. एमएमआर जीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डीएनए रिपेयर. ठीक है, आपने याद रखना है कि डेफिनेटली जीन काम नहीं करता, उसकी प्रोटीन काम करती है. तो मैं अल्टरनेटिवली जीन और प्रोटीन बोलूंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, सबसे पहले एमएमआर जीन जो कि डीएनए रिपेयर करता है, उसमें म्यूटेशन आती है. सो एमएमआर जीन कैन नॉट नाउ, because of the mutation, cannot repair the DNA damage, cannot repair the DNA. So there are mutation in the APC gene, that is tumor suppressor, and tumor suppressor gene cannot work. And there is a mutation in CD. Okay, so there is a mutation, maybe mutation in the CDC4s, right? Gene that control the cell division, and it increases the cell division. And in the same way, KRAS mutation increases the cell division. PI3K mutation increases the cell division. And many times P53 gene is mutated and it cannot work. Tumor suppressor cannot work. Tumor suppressor cannot work. So such events occur every day, but every time the mutation is repaired and we don't suffer from cancer. But sometimes if the mutation is very frequent, such kind of favorable for the tumor formation events can occur, and the person can suffer from colon cancer. So what is happening? This is the normal epithelium. When such kind of mutations are there, the small adenoma is formed in colon, and then large adenoma is formed, and then the cancer is formed. And you know, when the cancer is formed, the cancer stem cells can be detached from the site of cancer, from the site of tumor, and they can move to the other organ. Like you can see, they have moved to the kidneys. You can see these are kidneys. From the colon, the cancer stem cells have moved to the kidney, and they have moved to the, you can see maybe that this is the heart. They have moved to the heart. So this way, also there is another thing. This is COX2. This is again the gene that regulates, that enhances the cell division. And the PGDH gene, this is again the tumor suppressor gene. And this is TGF beta, this is again the tumor suppressor gene. And epidermal growth factor receptor, that increases the cell division, right? So this way you can see the mutation in the tumor suppressor gene make them inactive, and cells are divided uncontrollably, and it makes the tumor and it makes the cancer. Okay, so this is the signaling pathway. There are two signaling pathways have been shown that actually merges downstream. They start separately, but they merge here, somewhere here. You can see here fast ligand is here. This is fast receptor is here, and fast ligand binds to the fast receptor. This gray one is ligand, red one is receptor, and it activates its intracellular domain, and the FARD is activated, and FARD is then converting the pro-caspase 8 into the caspase 8, active caspase 8. You can see it is sparkling. Sparkling means it has been activated.
So caspase 8 then releases from the mitochondria the cytochrome C. Cytochrome C and the APOF1 then converts the procaspase into the active caspase. Procaspase means this is the inactive form and this is the active form, caspase 9. And caspase 9 then cause the apoptosis by cutting different proteins that are required for the cell working, and the blubbing and these kind of, you can see, pieces of the cells are formed and cell goes to the death by this pathway. Okay, these are the tumor biomarkers we will study now. I have taken this material from the internet, and the cancer is a condition which in which some of the body cell grow uncontrollably and spread. When tumor cells, they, for example, tumor is here. When these tumor cells are detached and move to other place and make the cancer at other place, this is called the metastasis. The movement of the cancer cell is called the metastasis. Spread and the movement of the cancer cell is called the metastasis. I may ask you in the exam. Okay, tumor is a solid mass of tissue that forms when the abnormal cell growth, okay, because of the normal cell growth. And also, sometimes it moves to other places and sometimes it does not move to other places. Metastasize is the process of metastasis. Tumor can be benign. Tumor, like we have the moles and we have some lumps on our neck, sometime on other parts of our body, but they are not increasing in their size. This is called the benign tumor sometime. Okay, they grow slowly and do not spread. Benign tumor grows slowly and do not spread. Like we have some this kind of lump on our neck, but if this lump is making some kind of this kind of fungative things, then this can be converted from the benign to the malignant. If this kind of fungative, अगर हमारे जो गर्दन पे या हाथ पे कहीं मोके हैं, अगर तो ऐसा है उसके, तो फिर तो वो बेनाइन है. अगर उसके इस तरफ उसके बाद थोड़ा थोड़ा इस तरह से फंगेटिव होने शुरू हो गया ना वो आगे से, फिर वो कैंसर बन सकता है, फिर उसको रिमूव कर देना चाहिए. ठीक है, तो मैंने आपको ये प्रैक्टिकली थोड़ी सी बात बता दी है. तो ट्यूमर्स कैन बी बिनाइन, दे ग्रो स्लोली, एंड दे कैन बी मैलिग्नेंट. मैलिग्नेंट का मतलब है वो कैंसरस हैं. मैलिग्नेंट क्या करेंगी? ग्रो रैपिडली, इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय नियर बाय नॉर्मल टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करेंगी एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. और बॉडी में कहीं पे भी स्प्रेड हो सकती है वो. कौन? मैलिग्नेंट कैंसर्स. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर क्या है? दे डिमिनिश्ड और अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ऑफ द ग्रोथ. ठीक है, या तो ग्रोथ को जो कंट्रोल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाती है या कम हो जाती है, तो सेल ग्रो होते हैं तो कैंसर बन जाता है. एक प्रॉपर्टी ये है कैंसर सेल्स की. कैपेबिलिटी ऑफ इन्वेजन ऑफ लोकल टिश्यूज, वो लोकल टिश्यू को इन्वेड करते हैं. डेफिनेटली कैंसर सेल्स ने ग्रोथ तेजी से करना होता है, तो डेफिनेटली उनको ज्यादा ब्लड चाहिए, उनको ज्यादा एंजियोजेनेसिस चाहिए. नई वेन्स के बनने को एंजियोजेनेसिस कहते हैं. अगर सेल ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो उनको नई नई वेन्स चाहिए, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए, उनको ब्लड ज्यादा चाहिए, तो वो नई नई वेन्स अपने गिर्द ट्यूमर सेल जनरेट कर देते हैं. तो अपने इर्द गिर्द के जो टिश्यूज को है उनको इन्वेड कर लेते हैं अपने फायदे के लिए, अपने बढ़ने के लिए. कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय मेटास्टेसिस. कैंसर सेल जो है बॉडी के डिस्टेंट दूर दराज पार्ट्स में भी चले जाते हैं, ऑर्गन्स में. जिस तरह कोलोन से वो कहां चला गया? वो किडनी में चला गया, वो हार्ट की तरफ चला गया. ठीक है, जिन फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है, अगर 5-6 साल उनको ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर उनको लंग कैंसर भी हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट के टिश्यू सॉफ्ट होते हैं, तो कैंसर सेल्स आसानी से मूव करके फिर लंग्स में मूव कर जाते हैं. ठीक है, आमतौर पर लीवर कैंसर जो बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होता, लेकिन दे कैन बी स्प्रेड बट नॉट इजीली. बट द ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्टली स्प्रेड. तो ये किसकी प्रॉपर्टी है स्प्रेड होना? ये कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल्स क्या है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, राउंड शेप होते हैं. ठीक है, जो ही सेल डिवाइड होने लगता है इट गेट्स बिट राउंड शेप because they divide quickly, so they are round in shape. कौन? Cancer cells. Transformed cells often grow over one another and form multi-layer. They grow on one another. Cancer cells grow on one another and can make multi-layers. They can make multi-layers. Biochemical changes क्या आती हैं? They make at high rate the DNA and RNA. आपको पता है सेल डिवीजन के लिए डीएनए को भी रेप्लिकेट करना पड़ता है, और आरएनए इसलिए ज्यादा बनाना पड़ता है क्योंकि नई नई प्रोटीन चाहिए सेल डिवीजन के लिए. तो इसलिए क्या करते हैं, वो डीएनए और आरएनए में बहुत ज्यादा पाया जाता है. किसमें जी? कैंसर सेल्स में. ये बायोकेमिकल चेंज है. चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड. आपको पता है कि लिपिड जरूरी होते हैं सेल की मेम्ब्रेन में. अगर नए सेल बनाने तो नए लिपिड बनाने पड़ेंगे, तो ये लिपिड उनमें ज्यादा होते हैं. किन में ज्यादा होते हैं? कैंसर सेल में. दिस इज अनदर बायोकेमिकल चेंज. अच्छा, ट्यूमर मार्कर्स की बात करें हम. ट्यूमर मार्कर्स आर बायोकेमिकल सब्सटेंसेस
Tumor markers are biochemical substances. Hormone enzymes are the protein synthesized by the cancer cells are produced by the host. ठीक है. अच्छा, मॉनिटर और हम कैसे उनको मॉनिटर कर सकते हैं? ब्लड सर्कुलेशन से कुछ ट्यूमर मार्कर होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में होते हैं, कुछ बॉडी फ्लूइड्स में हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे हो सकते हैं, जिस तरह ईआरबीबी. ईआरबीबी की बात अगर हम करें, ईआरबीबी जो कि ब्रेस्ट कैंसर में इंपॉर्टेंट है, ये सेल सरफेस पे होता है, ये वाला. कुछ सेल साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे अर्क म्यूटेशन. अर्क म्यूटेशन जो है ना, ये सेल के अंदर है, सेल के अंदर ये प्रोटीन पाई जाती है. इसमें म्यूटेशन से कैंसर होता है, इसमें म्यूटेशन से कैंसर होता है. ये कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, सेल के अंदर होती है. ये सेल सरफेस पे होते हैं. ठीक है. कुछ ब्लड सर्कुलेशन में होते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ब्लड सर्कुलेशन में कौन से. कुछ ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन है. ट्यूमर स्पेसिफिक का मतलब है ट्यूमर के सेल के ऊपर लगे होते हैं एंटीजन, जिस तरह ईआरबीबी की मैंने मिसाल दी. ठीक है. और कुछ जो होते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि ट्यूमर से वो कोई या तो फैक्टर रिलीज हो जाता है और वो सिर्फ ट्यूमर से ही एसोसिएटेड होते हैं, और इनके फैक्टर के, इस प्रोटीन के रिलीज होने से पता चल जाता है, इसकी डिटेक्शन से पता चल जाता है कि कैंसर सेल्स मौजूद हैं. और कुछ ग्रोथ फैक्टर या तो ज्यादा होते हैं, जिन्होंने कैंसर सेल को लगना होता है, जो सेल्स को की ग्रोथ को बढ़ाते हैं. दे आर कॉल्ड ट्यूमर एसोसिएटेड. एसोसिएटेड में उनसे लिंक्ड है, मतलब अटैच्ड नहीं है उनसे. ठीक है. उनकी कौन सी मिसाल है? एम्ब्रियोफोइटल टिश्यूज एंड द कैंसर सेल्स. एक ये उनकी किस्म है. एक है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है, एक अल्फा फेरोप्रोटीन. हम हर एक को अलग अलग देखते हैं. कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो है वो क्या है? ऑन्कोफोइटल एंटीजन हो सकते हैं, सॉरी ऑन्कोफिटल. ऑन्कोफिटल जो है ये वो मार्कर्स हैं, या तो वो फीटस में ज्यादा पाए जाते हैं और कैंसर सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं. अडल्ट में ये नहीं होते, इसीलिए इसको ऑन्कोफिटल एंटीजन कहते हैं. फीटस में ज्यादा, फीटस मतलब बेबी, छोटा बेबी. ठीक है. फीटस, फीटस जब बॉडी के अंदर, मदर के अंदर होता है, उसको फीटस कहते हैं, बोलते हैं. ठीक है. उस वक्त उसमें पाए जाते हैं, या फिर कैंसर सेल्स में पाए जाते हैं, या फिर एम्ब्रियोनिक टिश्यू में पाए जाते हैं. एम्ब्रियोनिक अगेन इट इज रिलेटेड टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियोज में पाए जाते हैं, और कार्सिनोमा में पाए जाते हैं. कौन? कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन. कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये एंटीजन किस चीज के हैं? ये ट्यूमर बायोमार्कर है. अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में हो, इसका मतलब है कैंसर हो गया है. ये कौन है? ये ट्यूमर मार्कर हैं, ये ट्यूमर बायोमार्कर हैं. अच्छा, जीआई म्यूकोसा में होते हैं, पैंक्रियाज में होते हैं, लंग्स में भी होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मैलिग्नेंसी में भी ये रिलीज हो जाते हैं, ज्यादा होते हैं. कोलोरेक्टल कैंसर में भी ये ज्यादा होते हैं. कौन? सीईए. ये कोलोरेक्टल कैंसर में भी ज्यादा होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में भी ज्यादा होते हैं. ठीक है. इन सब कैंसर में ये ज्यादा होते हैं. कौन? सीईए. सीईए कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन. अगर हम अल्फा फेरोप्रोटीन की बात करें, अगेन ऑन्कोफिटल एंटीजन है, फीटस में ज्यादा होता है और कैंसर सेल में ज्यादा होता है. हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा में ज्यादा होता है. ठीक है. जर्म सेल ट्यूमर में ज्यादा होता है, टेस्टिस एंड ओवरीज में ज्यादा होता है, और यॉर्क सैक ट्यूमर, ये कैंसर ट्यूमर की किस्म है, यॉर्क सैक ट्यूमर में ज्यादा होता है. अच्छा, अगर हम बात करें एचसीजी की, एचसीजी प्लेसेंटल हार्मोन है. ठीक है. जर्म सेल में होता है, ट्यूमर्स में होता है, ट्यूमर ऑफ द ओवरी में ये ज्यादा होता है. कौन है? ये बायोमार्कर है, एचसीजी, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन. ये क्या है जी? कैल्सिटोनिन है. ठीक है. कैल्सिटोनिन कहां पे होता है? ये लंग कैंसर में ज्यादा होता है, ये थायराइड कैंसर में ज्यादा होता है. इसके बाद प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज. ठीक है. पीएपी, ये प्रोस्टेट कैंसर में ज्यादा, प्रोस्टेट कैंसर. ठीक है. प्रोस्टेट कैंसर में ज्यादा होता है. ठीक है. जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रोस्टेट है, उनमें ये कैंसर, ये मार्कर ज्यादा होता है. कुछ प्लांट ट्यूमर्स हैं, प्लांट ट्यूमर की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा. डेफिनेटली प्लांट ट्यूमर्स में क्या है? या तो पैथोजन से ट्यूमर्स बन जाती हैं, या स्पॉन्टेनियस कोई म्यूटेशन से ट्यूमर बन जाती है. स्पॉन्टेनियस का मतलब है ऑटोमेटिकली ट्यूमर बन जाते हैं. ठीक है. या फिर पैथोजन से बन जाते हैं. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. ठीक है. आपका शुक्रिया. आपकी मैं अटेंडेंस ले लेता हूं अभी.